Namaskar and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Now, Sattology builds your identity. Mythology actually destroys your identity. The word mythology was especially coined to, to make the history of natives of all over the world as less important. The most advanced civilization which the colonizers found was in India. And to defeat that, they had to take academic route because they could not defeat them militarily. They could not defeat them. The only way they could have undermined it through academic route. So they decided to change the topics or the translations of the ancient Sanskrit writings. If you study the history, majority of the Sanskrit literatures from India were taken to UK via Germany, and this translation work was done. And while doing the translation, they infused Christian values because India they have different values, is based on Sanatana Dharma, Vedic values. Replaced them with Christian values and Christian words and sent it back to India. And that is the colonization part because they could not have done anything else. And once they weakened that, and then the military conquest started in a full swing. A very, very special guest. We are going to talk about Kaal part 2, Kaal Bodh part 2, and other aspects of time which we did not cover last time. So let's welcome Dr. Aparna Dhir Khandelwal. Welcome. Namaste, Aditi ji. Namaste. Namaste. So my समय खराब है आज सबके लिए, especially बॉलीवुड के लिए. Time is bad for Bollywood. People say generally, time is not good now. Time is bad. So can the time can be good or bad, or it is just a perception? I think for this we need to have a philosophical mind because all depends on our karmas only, karma philosophy. Yes. So if you have done good things to you or towards the world or others, then time is always good for you. If you have done bad things, so time is always bad for the one who has done that. So I think time governs by karma only, and that is a different topic. I think that can be explained in a explained on at large in a very different kind of talk. Now we have a habit of blaming something, and we have to blame someone. Like now we blame the time because it is the abstract thing. But in the Vedic culture, if you look at the Vedic philosophy, Krishna says, "I Kalo Asmi," that I'm time, and I'm out there to destroy the three worlds. And he says that, and it was quoted by Oppenheimer too. Well, Oppenheimer did not study Bhagavad Gita properly, so he misquoted it. And he wanted to present, again, being a Christian, he wanted to present a negative view about Bhagavad Gita. And here the context in which Krishna was saying is completely different. But we all see that everyone is in US, time is money, time is everything in the and viewers must watch the part one of this show, which will be on the link in the cards. You can check out the cards towards the video. Then you'll see the video of this call also. So in this time today, call in this call, now some people say now different options, different things are there. Some people say that the Kali Yuga had already ended. Many people they say that Kali Yuga had already ended, or Vedic Kal, Vedic period, as if Kali Yuga is not continuing. So Vedic period never ends. So what what is their viewpoint of Kal according to you? See, I think that they should first aware of this thing that time is a cyclic in nature. Time is cyclic in nature. And that can very well explained by me in my previous talks. I had 7 talks on your show in which I have said this thing again and again. And others also, like you have already talked about the Kali Yuga period in your one of your talk. So when one understand that time is cyclic, then no one can say that this era has been ended or that era has been ended. Even about the corona also, we cannot say that because still there are lots of protocol we are facing these things. No, it is not going to go away, hopefully. I mean, even if we want to.
So let's get started and we'll continue our discussion. Sure, sure. So I had my last talk related to that only, this only, that is understanding the Kaal, that is the time, and that you can very well view that talk as Kaal Bodha in the Sattology series. And in this, I have explained mainly in my last talk, I have explained that what is Kaal as per the Brahmins of Yajurved. So again, this is the part two of that explanation only, and we are just moving ahead with few more points related to Kaal only. So as you can see, a person is doing some ritual or a sacrifice. So actually, books of Yajurveda are dealing with the sacrificial or the ritualistic practices. That's why I have chosen this picture, which was there in my last talk also. So if we broadly speak about the yajna, that is the ritual practice, it is nothing but the act of surrender only to please the gods. The act of surrender, we are surrendering our ego, we are surrendering our time, we are surrendering our various things like जो हम आहुति दे रहे हैं, they are that is also in the process of surrender, mainly to the gods only, to please the god. And god are nothing like the nothing like there is जिसको हम कहें कि कोई मूर्ति या कुछ ऐसा रख के हम बात कर रहे हैं, नहीं. It is Vedic gods are related to nature only. So to please the nature only, the nature, the surroundings, the environment we have, that is the पंच महाभूत जिसमें हम आ जाते हैं हमारे, that is Agni, then water, then Akash, then जो इसके बारे में हमारा जो इस सब इसमें जो गगन है, जो जैसे मैंने आकाश बोला, तो जो पंच महाभूत की हमारी फिलोसफी है, दैट इज बेसिकली आवर सराउंडिंग्स. और उसी से रिलेटेड जो जैसे इंद्रदेव है, वरुण देवता है, सोम है, तो ये सब देवता के रूप में जो जितना फ्लोरा फौना है वो भी एक तरह से गॉड है. तो ऑल दीज कंस्टिट्यूट टोटल in totality as God, as Vedic gods, and basically to please them, we are offering something to them, like many things are mentioned in the Brahmins of Yajurveda that can be used as ahuti, so, to please the god. So this is about the yajna in very short. I have explained this, and what we have, why we are doing this, because we need longevity, we need a good age, a healthy age, we need peace, prosperity, we need जो ब्राह्मण्स ऑफ यजुर्वेदा है वो मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो हेवन की बात कर रहे हैं, मतलब कि स्वर्ग की बात कर रहे हैं. दे वांट ऐसी प्लेस जहां पर पूरा का पूरा उनके आसपास पीसफुल एनवायरनमेंट हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई दुख ना हो. तो दैट इज दे आर डिस्क्राइबिंग दैट थिंग, दैट प्लेस एज हेवन. And then again, they want a better crops, a good cattle, a good family, everything related to the materialistic gains, basically you can say, related to are the main result of the yajna in the Brahmanical period. But after all, moving to the from the Brahmanas to the Aranyakas and the Upanishads, then we can say that these things, these materialistic gains, doesn't even matter a lot, matter to anybody. So they actually want the final peace, that is the moksha, the final happiness. So they are looking for that thing in the Upanishad, but not in the Brahmanical era mainly. So this is the reason they are performing yajna. My basic point here is this only. Then any yajna they are performing, it has one particular duration. It has to be done within a duration only. That duration can be of a month, can be of a year, can be of years, or of few hours or something like that. So how these duration can be calculated, that's the point I raised in my last slide also, in my last presentation also. So we can say that the term I have used for such a period of time or duration of time is that is known as Vyavharik Kal. That is the practical Kal, practical time. The time which, like I ask you, what is the time now? अभी आप बोलेंगे अभी तो सुबह है, कोई कहेगा अभी तो दोपहर है. तो इस तरह से जो हम किसी से बात करते हुए बताते हैं, लाइक दिस राइट नाउ इट इज सनराइज टाइम, और इट इज अ डे टाइम, और इट इज अ नाइट टाइम, और इट इज
the time when sun is setting and moon is rising. So this kind of discussion comes into the uh, practical units of time. We can say that I mentioned here as Vyavaharik Kal. Whereas if we talk about the time as the biggest unit or the smallest unit, then we have lot other time units in which I have already explained in our previous talks, like Samvatsar is the biggest one. Then we have Ayan, Ritu, Mas, Tithi, etc., etc., and that can be discussed later on at full explanation in various talks in other subsequent talks. So talking about the Vyavaharik Kal only, that is the main practical time period I which I just mentioned. It is related to the period that is there to perform a yajna. It can be of period of hours or days or even months or few minutes only. So जो बहुत छोटा सूक्ष्म काल है यहाँ उसकी बात हो रही है, और जो हमारे व्यवहारिक मतलब कि व्यवहार में जो हम बातचीत में जिस काल को यूज करते हैं, जिन टर्म्स को यूज करते हैं, दैट टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू द व्यवहारिक काल. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू ऑफ देम, like Sai Prata. We have already discussed this in our previous talk. Then we have discussed about the Purvahan, Madhyan, Aprahan. That was also discussed. Then we have discussed about the Savan, then Bhut, Bhavya, Bhavishya. So these terms were already discussed in the previous talk. Now, why all these were important? Because I mentioned that also there that if we don't know about the Bhut, Bhavya, Bhavishya, then how could we today understand what is past, what is present, what is future? So these terms basically is the first time they were used in the Brahmin era by the Vedic Rishi. Before that, in the hymns, these terms were not there. And after that, they are being using every time people are performing any yagya or even into their day-to-day activities. So, for example, if we talk about the Madhyan Kal, I mentioned in my last talk also that it is the period, that is the middle time of the daytime, forenoon you can say. एंड देयर दे हैव गिवन एन अस एन एग्जांपल कि मध्याह्न काल ऐसा है जिसमें कि छाया जो है, जो सनशेड है, दैट इज बहुत छोटा होता है. छोटा क्यों होता है? क्योंकि सन हमारे ऊपर है, और उन्होंने कहा ये काल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मध्याह्न काल, मध्याह्न जो टाइम है, दैट टाइम यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज at that time the sun is above on your head, and the shade of the sun और योर पर्सनल जो आपकी अपनी छाया है वो बहुत छोटी हो जाती है. अगर हम माध्याह्न काल के बारे में हमें ये बात ना पता होती या ये छाया ज्ञान हमें ना पता होता, तो हमें कैसे पता चलता आज इस बारे में जो हम बात करते हैं. आज हम आराम से कहते हैं. छाया पर आधारित बाद में बहुत से ग्रंथ भी मिलते हैं ज्योतिष में, और वैसे भी एस्ट्रोनॉमी में भी हो सकते हैं इस तरह के ग्रंथ. हमारा जो जंतर मंतर आप सब देखते होंगे इंडिया में, एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स ऐसी बनी हुई है where you can where you can go and study the impact of sun rays during the whole daytime when sun is there from the sunrise to the sunset. You can study the how sun rays comes to अर्थ एंड उसका जो शेड बनता है वो किस तरह से किस हिसाब से होता है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग द टाइम ऑफ द डे. सो अगर अब हम माध्याह्न काल की बात करें, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अगर आपने लेटर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट देखे हो, you may be aware of that later astrological text, that is a Surya Siddhant. It is related to the Siddhant books of astrology, where they have one chapter, three Prashnadikar. Three Prashnadikar is one chapter which deals with the Chaya Padati, that is कि जो सन रेज का इम्पैक्ट आ रहा है पृथ्वी पर वो किस तरह का आ रहा है. और छाया पद्धति में they have given one word, one term for the माध्याह्न काल छाया, that is the palbha, that is known as palbha. So माध्याह्न काल की छाया सबसे छोटी होती है और उसे पलभा कहा जाता है. ये जो ज्ञान है ये हमारे साथ हमें आज सूर्य सिद्धांत दे रहा है. सूर्य सिद्धांत भी आज का ग्रंथ नहीं है, बहुत पुराना ग्रंथ है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू द लेटर एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स which are
which can come after the Vedang Jyotish period, post Vedang period you can say. So इतना इस तरह का ग्रंथ है. एंड ये जो ज्ञान सूर्य सिद्धांत में आया वो कहाँ से आया? यजुर्वेदीय ब्राह्मणों से आया. This point I want to make here very clear, and that's why I have raised again this Madhyan point again in this presentation. So, moving ahead, now we are left with three more words, three more terms of the Sukshma Kal Gyan, that is Divya Divya, Adhyashva, and Ahoratra. So, as you can see, this particular slide is going like a aeroplane because we have already discussed this in our previous talk. So no need to have so much burden on your mind why we are discussing again this thing. So we are moving with the new terms of Sukshma Kal in this presentation. First of all, I have the word Divya Divya from both the Yajurvediya Brahmins, in which they have discussed this. Like for here, I have given the example of Shatvat Brahman only, in which they are saying that जो गार्हपत्य अग्नि है उसके प्रज्वलन की बात हो रही है, और दिव्य दिव्य उसमें आप शब्द देख रहे होंगे. यू आर लुकिंग दिस वर्ड. सो दिव्य दिव्य वर्ड के लिए यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये कह रहे हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हम अग्नि को बार बार जो है दिन प्रतिदिन डेली, दिव्य दिव्य इज डेली, दिन प्रतिदिन हम उन्हें नमस्कार करते हैं. रोज रोज या प्रतिदिन हम उन्हें नमस्कार करते हैं. इस अर्थ में यहाँ दिव्य दिव्य शब्द मिलता है. तो ये शब्द अगर दिव्य दिव्य शब्द नहीं होता तो आज जो हम अपनी रूस की बोलचाल की भाषा में in our day-to-day life we are using the word divya divya, or we are saying like in our daily activities. So this daily word is actually from the Brahminical era, and that too mainly from the Yajurvedic Brahman, in which we have the word divya divya. So divya divya equivalent to daily. So moving ahead to another word that is adhyashva. Adhyashva, this is again from the Shatvat Brahman. It says जो आज और कल के अर्थ में आता है. अध्य मीन्स आज, श्व मीन्स कल. अब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई ग्रामर की क्लास चल रही है. नहीं, it's like actually I'm just giving you this grammatical orientation of the word, but basically adhyashva is in context of the Surya, where it says, where the shloka of this, where the vakya, reference of this Shatvat Brahman says, the sentence says that Surya is the one, the sun is the one which comes daily, and it remains there even today and even tomorrow. It comes daily to us, and it is here for today and comes tomorrow as well. So this is how we can understand that moment the rotation of the earth was known to the Vedic people. They knew that sun comes daily, sun rises daily, sun sets daily, and sun is there every day, and also the existence of sun is on the daily basis, that is today and then the tomorrow as well. So this is how they have explained, and they have given us the idea of divya divya and the adhyashva. Very small time units we are discussing in this presentation. Now the major one is the ahoratra. Ahoratra, I have maybe I have discussed about this in my Samvatsar presentation, in which aha means day and ratra means night, which maybe you all can understand from the word itself, ahoratra. If you see Kshatriya Brahman or the Kshatriya Brahman, that are basically the Brahmins of Yajurveda only, they have the words Ratri, Naktam, Diva, Divas, Aha. इतने words आपको दिखेंगे in context of the ahoratra only. That is the like I said, Yoma Naktam. Naktam is again Ratri. Diva is day. Sayam is Sai, Pratash, Prata is morning. Sai is evening. Aha means day. Then उसके बाद Adhya means आज, today. So all these time units, or very smallest time units, are there in the time of Kshatriya Brahman. This I like to mention here. Then about the day. First of all, both the Brahmins have given the description that this day and night is actually
created by the creator himself. That is, and the creator is not nobody else. He is the one who has created other things also in the universe. He is the one who named as Prajapati. So whole Vedic literature, actually in whole Vedic literature, Prajapati is the one who is the creator of every being in this universe, and day and night is also the part of creation as well. So they have the Rishi explained. Then when Prajapati was creating the day, तो एट दैट टाइम देवों के सृजन में जो प्रकाश हुआ उससे दिन बने. तो डे कैसे क्रिएट हुआ? ही सेड कि जब देवताओं का जो प्रजापति है, इट इज देयर इज अ नरेशन, वन नरेशन लाइक दैट, दैट प्रजापति हैज टू किड्स, और टू यू कैन से टू, उनकी दो तरह की प्रजाएं हैं, एक देवताओं की और एक असुरों की. और वैसे तो खैर मनुष्यों की भी है, बट मेनली जो डिस्क्रिप्शन जो कम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वो देवताओं और असुरों का है. तो इस नरेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया, जब उन्होंने प्रजापति ने देवताओं का सृजन किया, देवताओं को बनाया, एट दैट टाइम देयर वाज होल लाइट, प्रकाश हुआ, उस समय बहुत प्रकाश हुआ, और वो जो प्रकाश था वही जाके दिन बना. इस तरह से ये हमें बात मिलती है. अगर कोई चाहे तो इसको रिलेट कर सकता है, जो पुराणों में भी इस तरह की स्टोरीज आती हैं, बट अगेन द ओरिजिन इज फ्रॉम द वेदास ओनली, एंड मेनली फ्रॉम द यजुर्वेदी ब्राह्मण. In this context I mainly mention. So then he said, असुरों के सृजन में जो अंधकार मिला, असुरों के सृजन में जो उन्हें अंधकार मिला उससे रात बनी. तो अब इसका मतलब उन्होंने बताया कि उनकी दो संतानें, जैसे मैं बता रही थी कि जब देवताओं को उन्होंने बनाया तो सब तरफ प्रकाश हुआ, उससे दिन बने. जब उन्होंने असुरों को बनाया तब उन्हें सब तरफ अंधकार मिला और उससे रात बनी. इस तरह से प्रजापति से ही डे एंड नाइट की या अहोरात्र की उत्पत्ति बताई गई है. देन देर इज अ स्टेटमेंट इन शतब्रह्मण विच सेज वा अहोरात्राय अहोरात्राण्य अनंताः, अर्थात ये जो अहोरात्र हैं वो अनंत हैं, दे आर काउंटलेस. दीज जो डे एंड नाइट्स हैं, उनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे डे एंड नाइट. अहोरात्र इज डे एंड नाइट. It is anant. Anant means countless. You cannot count which is the first one, which is the second one. नहीं, you cannot count. That's why it says अविनाशी ब्रह्म के शासन में ही अहोरात्र की स्थिति होने के कारण अनंत है. अविनाशी ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म is the word for technical term, again as per the Vedic literature only, is the term for the Prajapati, and Prajapati is the term for the creator of whole universe as per the Vedic literature. So you can say Avinashi Brahm equivalent to Prajapati, equivalent to creator, and this creator is the one under whose guidance or direction, or who is the one who has created this day and night. And because he has created this day and night, so these day and nights are anant, they are countless. Because creator की जैसे कोई age नहीं है, similarly you cannot count, you cannot stop this day and night. So in this way we can say, when we say that ahoratras are anant, when they are anant, so again they are cyclic in nature. हम उसका कहीं आदि और अंत तो ढूंढ ही नहीं सकते. We cannot find the start or the ending of the ahoratras. So they are cyclic in nature. So again, when ahoratra is cyclic in nature, so as the months, so as the seasons, so as the samvatsar, so as the Kaal. So this is how we can elaborate this Kaal concept by the way of this ahoratra. So now moving ahead, they have given another description that they are ahan, aha is shukla and ratri is krishna. जो दिन होते हैं वो सफेद होते हैं, शुक्ल होते हैं, व्हाइट होते हैं, बट नाइट्स आर ऑलवेज ब्लैक. सो ये उन्होंने एक रंग से, मतलब हम कह सकते हैं कलर डिस्क्रिप्शन, कलर डिफरेंशिएशन दिया है टू एक्सप्लेन द डे एंड नाइट. देन शतब्राह्मण सेज रात्रिर्वै चित्रावसु. चित्रावसु is the word used for the ratri or the night. Why? जितने भी चित्र यहाँ दिख रहे हैं हमें यूनिवर्स में, whatever pictures we are seeing, whatever creation we are seeing,
When it is a night time, everything gets diluted in the night only, in the color of the night. We cannot see anything in the night time. So सभी चित्रों को जो ढक लेता है, जो छिपा लेता है, वो रात है. इस तरह से शतपथ ब्राह्मण में बताया गया. तो अगेन बहुत ही सुंदर तरीके से, अमेजिंग वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बाय द ऋषि टू एक्सप्लेन द नाइट थिंग. Then it is explained, it is said that संवत्सर जो है वो कैसा है. नचिकेता अग्नि के माध्यम से यहाँ बताया गया. नचिकेता अग्नि इज अ टर्म अगेन इन द तैत्तिरीय ब्राह्मण विच सेज, विच इज अ काइंड ऑफ विच इज अ यज्ञ बेसिकली, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जो नचिकेता अग्नि का जो यजन करते हैं उनको, उसके लिए अलग बेनिफिट्स बताए गए हैं. वो एक पूरा का पूरा एक स्टोरी है, पूरी नरेशन है. तो यहाँ पर एक तरह से बताया गया कि जो संवत्सर है वो एक तरह से अग्नि है, पूरा एक यज्ञ है, आप समझ लीजिए एक अग्नि है. और एक बहुत बड़ी उसको साथ ही उसको एक पक्षी के रूप में भी बताया गया है. जो संवत्सर है वो एक पक्षी के रूप में है. और जो अहोरात्र है, डे एंड नाइट है, वो उसके दो पंख हैं. दैट इज जो डे एंड नाइट आर दी टू, यहाँ पत्राणी वर्ड जो है वो पंख के लिए आए. पंख मीन्स विंग्स. जो डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट आर दी टू विंग्स ऑफ द संवत्सर एज बर्ड. जो संवत्सर है, इट इज लाइक अ बिग ईगल, एंड द डे एंड नाइट आर टू विंग्स ऑफ दैट ईगल. और वो भी कैसे हैं. जो डे है दैट इज द सिल्वर विंग, एंड जो नाइट है वो गोल्डन विंग है. इसको इस तरह से बताया गया है. यहाँ आप रजत और सुवर्ण शब्द को देख सकते हैं. रजत इज सिल्वर एंड सुवर्ण इज गोल्ड. तो इस तरह से इसको बताया गया है. और यू कैन से द वाइस वर्सा, इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल आल्सो. सो मूविंग अहेड, देन इट इज सेड दैट प्रजापति ने सृष्टि को दिन और रात से घेरा हुआ है. प्रजापति ने, प्रजापति इज द क्रिएटर, जिसने जितनी भी डे एंड नाइट है, उसने ये समस्त जो यूनिवर्स है उसके अंदर डे एंड नाइट जो है हर टाइम चल रहा है, कभी बंद ही नहीं हो रहा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो क्रिएटर है वो सबसे ऊपर है, और उसने डे एंड नाइट से चारों तरफ से पूरी जो सृष्टि है, जितने हम लिविंग बींग्स हैं, ऑल लिविंग बींग्स और होल क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर बाय द क्रिएटर इज बीइंग कवर्ड बाय, इज बीइंग fully covered by the day and night, that is the ahoratra only. So this way we can say that जो अहोरात्र है उसको उस तरह से भी एक्सप्लेन किया गया कि जब शतरुद्रीय यज्ञ किया जाता है, एक यज्ञ का नाम है, जो शतरुद्रीय जब यज्ञ किया जाता है तो उसके अंदर जो अहोरात्र है वो कुछ और नहीं है, ईंटें हैं. वो जो यज्ञ की जब हम वेदी बना रहे हैं वो बनती जा रही है, बनती जा रही है. उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से ईंटें हैं और जिस तरह से यज्ञशाला जो बनाई जा रही है और साथ में यज्ञ के लिए जो जो तैयारियां की जा रही हैं, उसी तरह से डे एंड नाइट से ही सारे जो सृष्टि है उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वही हर टाइम यहाँ पर आपको दिखता है. सो दिस इज हाउ मेनली बाय दिस स्लाइड वी कैन अंडरस्टैंड दैट टाइम as per the in the way of Avaratra, or the day and night is countless, is cyclic in nature, and that is created by the creator himself. So there is one question in the last talk session which says, not the question, it is the statement which says that time cannot be reversed, time cannot be stopped, time is cyclic in nature. So this is, if you want to connect that thing, that statement here, you can connect with this particular statement which says ahoratra ananta. ahoratra jo hai anant hai. So if we are discussing, if we are saying these words that time is cannot be stopped, time cannot be reversed, so you can very much relate this thing with this particular statement of given by the Yajurvedic Brahmanas. So after this, we have another description about the Ahoratra only in the way of day and night. They have classified day and night in various forms, like देवता के रूप में, जैसे कि उसके मित्र देवता हैं, उसके वरुण देवता हैं, उसके वो दिन जो है वो देवताओं के लिए होते हैं, रात्रि जो है वो पितरों के लिए है, दिन जो है ब्राह्मण के हैं, रात्रि क्षत्रियों की है. इस तरह से हम आप देख सकते हैं दिन जो है सूर्य से रिलेटेड है, और रात्रि जो है मून से रिलेटेड है. देन ईंटों के माध्यम से
देन उसके अलावा उनके रंग के आधार पर, और जैसा भी मैंने सोना और चांदी का बोला था वो थोड़ा सा मैं शायद स्किप कर गई थी उसको, इस तरह से समझिए क्योंकि सन है तो नेचुरली डे इज ऑन दी ब्राइटर साइड, उज्जवल है, एंड सोना है, एंड जो रात्रि है उसमें मून लाइट है, इट इज लाइक अ चांदी और दी सिल्वर थिंग। एंड देन अगेन इसको आगे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, दिस इज गिवन बाय द तेतृय ब्राह्मण इन दिस वे, and they have described that you can see that Rishi has described the day and night factor in uh, in a more elaborated way, because it is an important factor of the time. Then Tetri Brahman again explained how these day and night can be classified on the basis of fortnight. On the basis of fortnight. See, fortnight are also important. First of all, we have day and night. Then we have fortnights, and then fortnights became the month, becomes the month. So this is how you can say Purva Paksh is the word for the brighter days, and the other one is the Upper Paksh, which is for the जो सेकेंड हाफ, सेकेंड फोर्टनाइट रहता है उसके लिए आता है। तो पूर्व पक्ष के फर्स्ट 15 जो डेज हैं उनके नाम, एंड देन फर्स्ट 15 की नाइट्स के नाम, इट इज गिवन बाय तैत्तिरीय ब्राह्मण इन सो मच डिटेल, यू कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन एज वेल। संज्ञान, मैं डेज के नाम अगर बोलूं तो संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, जानत, अभिजानत, संकल्पमान, प्रकल्पमान। अगर आप इस तरह से चलते रहेंगे तो आप देखते हैं पूरे 15 डेज के नाम, फर्स्ट 15 डेज मतलब कि ब्राइटर फोर्टनाइट का फर्स्ट 15 डेज आपको मिलते हैं, और उन्हीं के ब्राइटर फोर्टनाइट के रात्रि के नाम अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ नेम्स हैं, इससे पता चलता है कि ऋषि का जो अध्ययन है वो कितना गूढ़ था कि उन्होंने डे एंड नाइट को अलग अलग करके उनके नाम तक दिए। और फोर्टनाइट के ऊपर अगर हम आगे बढ़े तो फोर्टनाइट से रिलेटेड ही जो उसका जो डिफरेंट सेकेंड हाफ है मंथ का, दैट इज नोन एज अपर पक्ष। उस अपर पक्ष के भी, अपर पक्ष वाला जो फोर्टनाइट है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, उसके डे के नाम्स नेम्स, एंड देन उसके बाद उसके नाइट के नेम्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि प्रस्तुत, विस्तुत, संतुत, कल्याण, विश्वरूप, शुक्र, अमृत, अमृत, तेजस्वी, तेजस। इस तरह से we can see that Rishi has given us the names of the brighter fortnights and then the dark fortnights, and then brighter fortnights again classified on the basis of day and night, and same in the case of the darker fortnight. So we can say that so much detail was there, and like 15 names were 15 names, 15 days. It means अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 15 डे ब्राइटर डेज के नेम, 15 डार्कर डेज के नेम, आपके पास 30 डेज के नेम आ जाते हैं पूरे के पूरे। और इसी तरह से आपके पास डार्कर डे नाइट्स के नाम है और उसी तरह ब्राइटर नाइट्स के नाम है, तो 30 नाइट्स के नेम आ जाते हैं, और यस 30 नाइट्स के नेम आ जाते हैं। तो एक महीने में मतलब कि वन मंथ के पूरे आपके पास डेज के नाम एंड पूरे नाइट के नाम आ जाते हैं। इतना गूढ़ चिंतन है वैदिक ऋषि का जो कि हमें यजुर्वेदी ब्राह्मणों में देखने को मिलता है। इस तरह का डिटेलिंग अगर किसी और टेक्स्ट में आपको मिलता है तो आप मोस्ट वेलकम है यहाँ पर इस सेशन में अपनी बात को उसमें कमेंट्स में आप दे सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेलिंग हमें सबसे पहले अगर कहीं मिला है तो वो यजुर्वेदी ब्राह्मणों में, और वो भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। इसीलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण इज द बुक, इज द जो ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है which needs to be researched not by the Sanskrit or the Vedic people. It is the book related for the science people. It is related. It is the book that can be, that should be researched by the astronomers as well, because it has so much information. It is a book which is talking about time in so detailing. So physics people should also study this granth. Then moving ahead, अहोरात्र में यज्ञ करने का आदेश दिया गया। डे एंड नाइट आर सो मच इम्पोर्टेंट टाइम यूनिट्स, बेसिकली दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम यू कैन से, बट दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, so that's why we have one अहोरात्र देवता। अहोरात्र देवता इज द वन जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपने वश में किया हुआ है। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, कौन सा दिन कैसा, हम आजकल व्यवहारिक पक्ष में कैसे कहते हैं कि कौन सा दिन कैसा आएगा हमें नहीं मालूम, क्या होगा हमारे साथ हमें नहीं मालूम।
तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब हम डे के कंट्रोल में हैं। इसी तरह हम रात के लिए भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि रात को सोने के, जब आप सो रहे हैं सोते वक्त प्रेयर करके सोइए, उसके बाद सुबह उठेंगे तब भी आप प्रे कीजिए। One should always do prayers while going to sleep, and then before once you awake in the morning, you have to pray to the Lord, to the God. Why you have to pray? Because we are actually in the control of the day and night only. Which day is going to be our last day? Which day is going to be, which night is going to be our last night? That is unknown to us. So दिस वे अहोरात्र जो है, डे एंड नाइट जो है, वो देवता है हमारे लिए, और इसीलिए देवता, दैट मीन्स वी शुड वर्शिप देम। इसीलिए अहोरात्र के लिए यज्ञ करने का और अहोरात्र में यज्ञ करने का आदेश दिया गया है कि डेली, क्योंकि डेली है तो डेली रूटीन में हमारा हो जाना चाहिए। इसीलिए अग्निहोत्र जो है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि सुबह सूर्य के लिए होता है, शाम को अग्नि के लिए होता है। इस तरह से हम यज्ञ को भी टाइम यूनिट्स के साथ यहाँ पर ब्राह्मणिकल लिटरेचर में जोड़ा गया है, रिलेट किया गया है। सो अहोरात्र देवता है और उनसे कुछ प्रार्थनाएं भी हैं, जैसे कि वो हमारी पाप से रक्षा करे। पाप से रक्षा करे की अर्थात हमारे साथ कुछ भी बुरा ना हो, इस तरह की बात, हमारे लिए सब चीजें अच्छी रहे हमेशा। हमारे सामर्थ्य की प्रार्थना, मैं हमेशा समृद्धशाली बनूं, प्रॉस्पेरिटी मेरे पास, आई शुड हैव द प्रॉस्पेरिटी, and that is again is the giver is the day and night only. Which days I am, which is the day when I am going to be the most successful one. We all want to have lead a successful life. So कोई ना कोई तो डे होगा when we rise above our above the sky, you can say. So वो जो प्रॉस्पेरिटी वाला डे है, इसलिए भी हमें अहोरात्र से प्रार्थना के लिए कहा गया है। एंड देन क्योंकि हमारा जो जीवन है, our life is actually being governed by the day and night cycle only. So that day and night should, the deity of that day and night should give us वेरी सक्सेसफुल लाइफ, और उसमें हमारी विजय हो। एंड उसके बाद उसमें कोई किसी तरह के दिन, देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्टिकल। हम जैसे कहते हैं ना कि आज का दिन ऐसा चढ़ा कि हमारे बहुत ही विघ्न आए, मतलब कि द डे वाज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स फॉर अस, एंड देयर शुड, आई प्रे टू गॉड दैट दीज ऑब्स्टिकल नेवर शुड कम इन माय लाइफ अगेन। तो इस तरह की जब हम बात करते हैं, इस तरह की जो प्रे करते हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, we are praying to day and night, deity of day and night only. So this much reference is given by the Yajurvediya Brahman. And now the final one is the देवतागत दिन का विभाजन, अर्थात जो हमारा डे है उसको देवताओं के आधार पर, मतलब फुल डे को जो हमारा उसमें सनराइज का टाइम है, दैट इज रिलेटेड टू द सविता गॉड। देन संगव, संगव मीन्स जो हमारा दोपहर का टाइम है, माध्यान्ह दिन से पहले जो माध्यान्ह काल है, फोरनून से पहले का जो काल है, सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और 12 बजे से जो पहले का टाइम है वो मित्र देवता उसके मेन देवता कहे गए हैं। देन माध्यान्ह काल इज रिलेटेड टू द बृहस्पति गॉड, एंड देन अपराहन, दैट इज द आफ्टरनून, इज रिलेटेड टू द भग देवता, एंड देन इवनिंग इज रिलेटेड टू द वरुण देवता। So these are all Vedic gods, and Vedic gods are nothing but the our nature itself. Like I said, the Panch Mahabhutas in the starting. So each, and like Varun Devta is related to the animals also, and the water also. So the Savita is related to the sun, or sun is related. Then sun is equivalent to Agni also. So this is how the Vedic concepts are there. But we are talking about the time only. So this is how they have discuss this thing. And the last one is they have, apart from all these time units, all these smaller time units, they have discussed one particular time which is not even a day and not even a night. That is the काल, जो कि दोनों ब्राह्मणों में कहा गया है, ना दिवा ना नक्तमिति, ऐसा काल जो ना दिन है ना रात है। तो आप सोचिए ऐसा कौन सा काल हो सकता है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक नरेशन दी है कि जो इंद्र हैं, इंद्र भगवान जो हैं, वो जो इंद्र वर्षा के देवता कहे जाते हैं वेद में, उन्होंने नामूची, एक राक्षस था, एक असुर था, उसका वध किया। ऐसे समय में वध किया जो जब सूरज अभी निकला नहीं था और रात खत्म हो चुकी थी। तो इट मीन्स मे बी जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, या ऐसा कोई टाइम है जिसकी यहाँ बात हो रही है, जिसको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट दे हैव एक्सप्लेन दिस थिंग
by saying this word that time period, which is not related, which is not even a day, which is not even a night. So with this word, with these words, I say that time is prominent in all the sense, and this is that's why Yajurvedi Brahmanas have explained it at large in their various sentences and the references. Thank you so much, Dr. Aparna ji. One thing very important comes in, like when there are Kal is important because the yogis they decide to leave the earth at a particular time. You know? And so therefore the Kal Garna is very important, which you mentioned many aspects today. Like it is said that in Bhagavad Gita 8th chapter towards the end, it is said what happens to a yogi when he leaves in the Urdhva in the morning time, and what happens to the yogi when he leaves in the night time. This is mentioned there. So, so it is important for people who are on the path of yoga. Yoga means nothing but it's bhakti also. It applies to everyone who is on the spiritual path. Yoga means spiritual. Generally, it means spiritual. Mine, I'm writing my next book, so I'm more into this Yoga Sutra today. So the question is that when people, and you can think about it and say, so when people do not worry about Kal and practice their yoga, whatever the yoga practice they do, what happens to them? What happens to them? See, sometimes I have even heard about this that जो बहुत ज्यादा योगी हो जाते हैं वो अपनी इच्छा स्वेच्छा अनुसार भी अपने प्राणों को त्याग कर सकते हैं। तो वो अब किस तरह का समय चुनते हैं, तो वो भी उन पे डिपेंड करता है। तो ये मुझे लगता है जैसे आपने योगी की बात की और फिर आप उसको योग से जोड़ रहे हैं और आप फिर गीता की बात कर रहे हैं, तो जब हम इस तरह से रिलेट करेंगे इतना उसको, तो वो एक लेवल अलग है। वो अटेनमेंट उस लेवल को अटेन करके क्या अब आपका मुझे लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि क्या टाइम हम अपने हाथ में रख सकते हैं, टाइम को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं, हाँ। मतलब वो लोग अपना योगी जो एडवांस योगी है उसको कंट्रोल कर सकता है टाइम को। सो इन द सेंस कि लाइक जैसे देयर इज अ मेंशन शुक्ल कृष्ण गते ह्येते जगत शाश्वते मते एक यात नावृत्ति अमन्य वर्तते पुनः। So here, like he can vritti the anavritti. So one time he goes, he passes on. जैसे एक समय में अगर योगी उस समय अपना प्राण त्याग करता है तो वो इस कर्म बंधन के चक्र से ऊपर निकल जाता है। अदरवाइज उसका वापस जन्म होता है। नहीं तो योग का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अगर योग से आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटकारा ना मिले तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ योग। सो नहीं तो आदित्य जी, अगर आप इस तरह से योग की बात करते हैं तो फिर हमारी कर्म फिलॉसफी कहाँ आती है। योग में कर्म इंक्लूडेड है, क्योंकि योग हाँ, में तो कर्म। हम कर्म करके योग तक पहुंचे ना। नहीं नहीं नहीं, योग योग कर्मसु कौशलम, मतलब ठीक है। कर्म को आप योग के रूप में कर कर सकते हैं। योग के रूप में करते हुए, तो वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि हम कर्मों को करते हुए ही योग तक पहुंचे, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो योग योग तक पहुंचे। योग और कर्म में कोई फर्क नहीं है। हम्म। सो ऑर्डिनरी एक्शन ऑल्सो यू कैन डू एज ए योग। ऑर्डिनरी खाने को भी योग बना सकते हैं, उसका एक मेथडोलॉजी है उसको। सो दैट्स व्हाई योग इज सेड समुद्भव कर्म समुद्भव। कर्म से ही हम्म। योग होता है, यू नो। लेकिन कर्म को सेपरेट करके योग करेंगे तो वापस बंध जाएंगे इसके अंदर। हाँ, नहीं वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि क्योंकि हम नॉर्मल एक्शंस को भी योग की दृष्टि से अगर करें, अपने आप को उनसे डिटैच करते हुए करें, तो नेचुरली वो योग के उसमें डेफिनेशन में आ करेक्ट, जाता है। करेक्ट। बट पॉइंट इज कि जब हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, जब हमारे अंदर वो डिटैचमेंट वाला फीलिंग आ रहा है, तो इट मीन्स हम योग वाले लेवल पे आ गए हैं या आ रहे हैं। तब हम टाइम को क्या अपने साथ कंट्रोल कर सकते हैं, वो अटेनमेंट हमारा हो रहा है क्या। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट से ही योग होता है। योग अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यू कैन डू, वो बोलते हैं ना, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासिधात निराशि निर्मम भूत युद्ध से विगत जोरा। मीन्स यू कैन परफॉर्म युद्ध ऑल्सो इन कनेक्शन विद मी। सो दैट इज बिकम्स योग राइट देयर। तो कहने का अर्थ ये है
कि काल गणना becomes very important in योग also, in regular karma also. आजकल people have stopped doing it, लेकिन every raja, and I can take Mahabharat instance, even come down to Marthanda Varma. मार्तंड वर्मा मुहूर्त के हिसाब से युद्ध करते थे, अभी मुहूर्त है, अभी युद्ध होगा. एंड ही वाज सक्सेसफुल. ही वाज द फर्स्ट किंग एवर in the history of modern world to defeat the Dutch navy of the coast of Kerala. So the people have used Kaal in a very different way. And Kaal को control करते हैं because since if you're following as per the science of Kaal, then everything can be decided, everything can be fought, everything can be done at the right time. So every king used to have one Jyotishi to calculate time with the Raja. Nowadays, all those sciences are not there. People think अपना कर्म करो, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ कर्म करते रहो. But karma also has to be directed, isn't it? I mean, you can do everybody is doing karma here. Everybody is eating, everybody is sleeping. That is also karma. Everybody is blinking. हम लोग पलक भी झपका रहे हैं, वो भी कर्म है. सांस ले रहे हैं, वो भी कर्म है. Everything is karma. Everything is a result of the karma. Otherwise, you won't be able to do it. So, my question is that why it is, जैसे कृष्ण बोल रहे हैं, शुक्ल पक्ष में प्राण छोड़ेंगे तो कर्म बंधन से बाहर, कृष्ण पक्ष में छोड़ेंगे तो कर्म बंधन के अंदर. गदा हेती, इन द लाइट, वन इन डार्कनेस. और ये एक है याते नावृत्ति मनवया या वर्तते पुनः. Like one karma done in Shukla comes out of the cycle. In Krishna, when you leave the prana, it comes back on the earth. So very important. Kal, if you want to do Kal Bodha and the science of Kal that we're discussing, that is the ultimate usage of the Kal science. To understand everything, Murtha, Samvartha, we did Samvartha sessions, we did. And uske baad, when we plan our life in such a way, then the same Kal becomes the cause of Mukti also. That's how you जी, can put in the practical use. even in the case of the Uttarayan and Dakshinayan, it is like that. और साथ में आपको तो भीष्म की स्टोरी पता ही है, वो उन्होंने कितना वेट किया. आप तो महाभारत के ज्ञाता हैं, तो आपको तो पता ही है. तो Yes. वो भी सेम रीजन था. और ये भी कहा जाता है जैसे संक्रांति के बाद जब ये मकर संक्रांति हो गई, वो बहुत ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है. एंड देन उत्तरायण तो स्टार्ट हो ही गया साथ में. Correct. तो उत्तरायण के टाइम पे, और ये क्वेश्चन मैं बहुत छोटी थी, एक बार मैंने ये बात रखी हुई थी किसी के सामने, कि मतलब जो दक्षिणायन में जा रहे हैं तो इसका मतलब उनको कोई मुक्ति नहीं है, वो सब वापस आने वाले हैं. तो क्या सब लोग अब टाइम फिक्स करें कि चलो उत्तरायण में ही चलेंगे? नहीं, क्या एक्चुअली मतलब 6 मंथ्स ऐसा करके सोचें? नहीं, फिक्स करने का जरूरत नहीं है. बट दिस इज हाउ यू प्लान. योगीज प्लान लाइक दैट. और एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट का क्या है? डिटैचमेंट इज अ क्वालिटी विच मेक्स एवरीबडी अट्रैक्टिव. People say detachment is negative, but if you meet as somebody detached, you're more inquisitive about that person. What is he doing? And हम्म. and the person who is attached, usko you taking for granted. So detachment is an attractive quality. तो वैसे एक ये भी चीज है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे फिर वही जहां से हम स्टार्ट किए थे वहीं मैं आ रही हूँ, कि उत्तरायण और दक्षिणायन में अगर हम जाना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा योगी चले जाते हैं, योगी अपने हाँ. आप से जा सकते हैं. तो योग अगेन योगी बनने के लिए या उस लेवल को अटेन करने के लिए आपका कर्म इतना स्ट्रांग हो कि वो आपको उस लेवल पे ले जाए. नहीं, मैं ये एक्चुअली मानती हूँ. मैं यहाँ पे एक आई नो व्हाट यू आर सेइंग. मेरे को समझ में आ रहा है व्हाट यू आर सेइंग. मैं क्या बोल रहा हूँ कि योगी बनने के लिए आपको कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है. You can be yogi in your current life also. कुछ it is never think that you become a yogi. You can be yogi in a common man, like a common person. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब अभी Having a जरूरी good नहीं कि आपको family. कोई ऐसे ड्रेस पहन के बैठना है No, कि आप योगी बन गए हैं, नहीं. not उसमें यही चीज है कि आपकी थिंकिंग, आपके कर्म, आपका सब कुछ आपको योग की तरफ लेके चल रहा है, और एज अ बीइंग अ योगी आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में. एंड वो ही आपका, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो ऐसे सब कुछ आप कर रहे हैं, जितने भी अभी हम बहुत सारी वैल्यूज की बातें करते हैं अपने यहाँ शो में, तो वो सारी चीजें हमें अपने आप ही उत्तरायण की ओर ले जाएंगी, मेरा ये कहने का मतलब. correct. You automatically see Uttarayan is the Dakshinayan. Uttarayan is a time, is a Kal ka Garna hai. Kal ka Garna hai. Dhumo Rati Tatha Krishna Chanmasa Dakshinayan. 6 months is a Dakshinayan and 6 months is Uttarayan. So the Arjun was a family person, warrior. He had 4 wives. 4 wives he had. And
वो भी योगी था, उसको तो पुलस्त ऋषि बोलते हैं हाईएस्ट योगी। एंड सो इट्स, ये जो बोलते हैं कि योगी बनना है तो यू हैव टू वेयर अ सैफरन, दैट इज अ योगी, दैट इज अ बॉलीवुड मूवी डिपिक्शन। वो लोग तो उसको नेगेटिव दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो तो पंडित को जोकर बनाते हैं, नारद मुनि को जोकर दिखाते हैं, तो वो तो उनका आदत है। लेकिन योगी तो एक साधारण व्यक्ति रह सकता है। ही कैन बी जस्ट वेयरिंग ए पैंट शर्ट कैन बी ए योगी ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ कंडीशन ऑफ द माइंड, इट्स नॉट ए कंडीशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस कि मैंने ड्रेस पहना है तभी मैं योगी हूँ। So there are sannyasis wear different dress. Not everybody has to wear orange dress. You can wear whatever you want. You can be in a jeans and shirt and be a yogi also. So The word rightly you said, condition of the mind is yogi. yes, it is never done on the basis of external appearance. मतलब लोग समझते हैं कि योगी मतलब जोगी बाबा बन गए, जैसे मूवी में दिखाते हैं गाना, ये सब सॉन्ग्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रिटन बाय पीपल आउटसाइड द वैदिक सिस्टम। यवनों, राक्षसों के लिखे हुए गाने होते हैं। सो उनको, उनके गाने सुन के हम लोगों को ये सब बनता है, बनता मेनी सॉन्ग्स आर देयर, बनता जोगी बाबा, लाइक सो मेनी सॉन्ग्स आर देयर लाइक दैट, हिंदी के रहते हैं ना गाने। सो लेकिन योगी बनने के लिए लाइक यू डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग, यू टू जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल। तो अपने आप ही वो टाइम आ जाता है, एंड वो आ जाता है। एंड so जैसे इसमें अग्नि ज्योति शुक्ल और क्षण मास उत्तरायणम, 6 months Uttarayan, and where there is light and there is a an evening time is considered bad. Tad prayata gacchante Brahma Brahma vido jana. So one who knows the Brahma with the science, they attain the Brahma. Brahma means the quality of the Atma. Quality is Atma's quality is which is freedom from vritti, because the science of vritti is very connected to Kala. Like how you practice, like in daily life also. Morning time is, according to me, my I'm not a night person. मैं 7 बजे के बाद आई एम ऑलवेज एट होम। जनरली आई हार्डली गो आउट। अगर कोई इवेंट में किसी ने बुलाया है, तो अगर वो भी मैं चेक करता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है वो मीटिंग में जाना, तभी मैं जाता हूँ। आई डोंट इवन गो टू एलए। एलए में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, मुझे बुलाते हैं कि आइए, और लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कि ये 7-8 बजे के बाद है, इसका वैल्यू अभी कितना है। इफ आई गो देयर, आई विल आई एड वैल्यू टू माई सेल्फ ऑन टू देम, देन ओनली आई गो। क्योंकि उसके बाद लोगों के दूसरे कर्म शुरू हो जाते हैं। सो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू टॉलरेट दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। तो आई एम मॉर्निंग पर्सन, तो फॉर मी मॉर्निंग इज द बेस्ट। तो इस तो तरह इसी बहुत। तरह से मुझे लगता है आप इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए। अभी जो हम कह रहे हैं कि ब्राइटर साइड जो है वो आपको मोक्ष दिला रही है, और जो डार्कर साइड है वो आपको कुछ नहीं दिला रही है, असुर प्रवृत्ति हो रही है। तो अभी आपने खुद ये स्टेटमेंट बोला कि 7 बजे के बाद मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि बाद में उनका टाइम का अलग ही कुछ और हो जाता है। राइट। तो वो जो कुछ और है वो अपने आप में हो गया कि जितना आप राइटर की तरफ रहते हैं उतना आपका जो है वो गेन करते हैं आप, और कुछ ना कुछ अच्छा चलता है साइड बाय साइड। और जितना डार्कर साइड होता है, तो जैसे वो चित्रा वसु मैंने शब्द का प्रयोग किया था, शब्द ब्राह्मण से लिया था, तो रात्रि है वो सब कुछ समेट लेती है, सब कुछ छुपा लेती है अपने अंदर। तो अगेन वो हमारे जो कर्म है, हमारी अच्छाई है, सब उस टाइम सब बिगड़ जाते हैं, सब असुर प्रवृत्ति में बदल जाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए शायद ऐसा होगा जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअली द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ ऑल द डिस्कशन वी हैव, 2 shows है काल बोध पे, सेकंड शो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यही है कि नाउ यू प्लान योर लाइफ इन सच अ वे दैट यू बी लाइक अर्जुन इफ यू वांट टू फॉलो। इन सब लोग अर्जुन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हाउ ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ। यू नो, उसका लाइफ काफी कंट्रोल था। लाइक ही यूज्ड टू गेट अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग, 3 in the morning, बट एंड ही वाज अ सक्सेसफुल मैरिड पर्सन। उसका, he was very attracted to many people because of his two qualities. One was his physical appearance, he was a warrior, तो उसका physical appearance was very strong. Secondly, उसके अंदर renunciation की qualities बहुत ज्यादा है, detachment की। तो that's why people were attracted to him, big big। अभी अर्जुन के बारे में स्टोरीज आप देखते हैं, या नकुल के बारे में, नकुल इज ऑल्सो योगी, very powerful yogi. People, very few people know कि without the yoga knowledge, without the Kal knowledge, you cannot be a warrior. Not possible. Because any kind of weapon system, even today's weapon systems, वो तो काफी lower quality के अभी, metal based है. Those weapon systems also require a very stable mind. Most of the training in the army is how to control yourself. All the armies, whether it's a US Army or Indian Army,
any other good army. I'm not talking about terrorists, but this is how to control yourself. That is yoga path, how you control your mind, control your emotions, control your speech. All those things are required for a good warrior. Uh, And those qualities are even required in the corporate world or any other world. नहीं तो आप successful नहीं हो सकते. Because the distractions are everywhere. You know? So great session, and I really liked it. And I think this is the practical implementation if you are on the yoga path, because then the Kala Bodh is extremely important. You need to know the minuteness of time. People, मेरा एक शो भी है, अणु परमाणु त्रिसरेणु, that how the time is calculated, and in that people go to the minute level of chana. Chana is 1/6 of a second. It is 1/6 of a second. To that level they go, and the time in the Vedic calculation is minutest. Like for example, Anu Parmanu, the movement of Parmanu Trisarenu, that is 1/18th of a second. That's how minute they go. And to be on a battlefield for Arjun and suddenly invoke a weapon, and that two weapons cannot, some certain weapons cannot be invoked in the night. It has to be invoked when the sun is still out, and some weapons can only be invoked when Chandra is out. So all these sciences are there, which are very important for both yogi and Yodha also. So you have very well connected the science of Kaal with the yogis and then the warriors. Yeah, because all Yodha, Yogi, they all come from the same root, Yuj. And so Yeah. the word Yukta also comes from there. जी. Yukta means purpose, so utilitarian employment or utilitarian connection. मतलब जिसका जरूरत है वो युक्त है. अभी इसका हिंदी में और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट द रूट्स आर द सेम, युज धातु. So and the yuj dhatu goes very with the kala bodh, because all these actions, if you have to be successful, like all the business meetings in the US happen at 7:30 in the morning. All business meetings generally, if you know the time now, every 7:30 in the morning is business meetings happen. In India, the business meetings happen at 9 in the night or 10 in the night. You know, but in US, the business meetings happen in the morning because nighttime people reserve it for the family. It is a good practice. But in India, certain places, people do business in the morning while walking or while running or going to a laughter club. So We all are opposite of the globe, but we are, and also we are, yeah, अपनी जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे आपने बिजनेस मीटिंग्स का एग्जांपल दिया, इंडिया और यूएस में अभी यही चेंज आ गया कि यूएस इंडिया होता जा रहा है और इंडिया यूएस होता जा रहा है. India, US can never. India is India. India is the home of Vedic culture. नहीं, लेकिन जो आपने ये बात कही, ये बात सच है. हम लोगों का यहाँ पर 1:30-2 बजे भी ऐसे लगता है कि अभी दिन चढ़ा, मतलब सुबह हुई हुई है. हाँ, और people. रात की. एंड सुबह के टाइम पे सब लोग 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, अनलेस हमें कहीं जाना नहीं है तो. Yeah, I get really frustrated जब मैं भारत में होता हूँ, तो वो लोग 11 बजे सो के उठते हैं. 11 बजे my 6 hours is already passed. है ना? दैट्स ट्रू. दैट्स व्हाई आई सेड कि यूएस क्या चीजें इंडिया में आ रही हैं और इंडिया की यूएस में जा रही हैं. एक्चुअली जो इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर है, वहाँ पे ये सब वैल्यूज अभी भी है. एंड हम्म. दैट इज अ बिग पॉपुलेशन. आई विल से इट इज 40% ऑफ इंडिया. उसमें ये ट्रेडिशनल वैल्यूज है. जो ओनली द अर्बन सेंटर्स है, वहाँ पे इज अ डिफरेंट थिंग, where the first meeting happens at 12 noon, which is, it must have changed now, but my experience whenever I go to India is still the same, 11, 12. ठीक. So ये thank अभी you भी so ऐसे much. ही है. Yeah. जी. Thank you so much, Dr. Aparna. And thank you all the viewers for watching. And do like, subscribe, and share the videos. And I'll see you next time. Namaste. थैंक यू. नमस्ते.